Hello, Namaskar, Vanakkam. One of my students, Venkat, told me yesterday that the word pre-boards really stresses him out. And I'm sure Venkat is not the only one who gets stressed by this term called the pre-board examinations. Because जिस तरह का एक हवा क्रिएट किया जाता है, ऐसा लगता है the heavens would fall if you don't do well in the pre-board examinations. If you do poorly in the pre-boards, it triggers off alarm bells both at the school level and at home. बूम, इस लड़के का तो कुछ नहीं हो सकता, शर्मा जी के बेटे को देखो 98% आए हैं, 98% प्री बोर्ड्स में आए हैं, तो बोर्ड्स में तो 99% आए हैं, और इस निकम्मे को देखो 38% लेके आया है, 48% लेके आया है. दैट्स अ काइंड ऑफ सिनेरियो दैट प्लेस आउट एट डिफरेंट होम्स, राइट. निकम्मा लड़का है, सब लोग 11th में चले जाएंगे, तू ही 10वीं कक्षा में बैठा रहेगा, उस तरह के ताने कसे जाते हैं, राइट. स्कूल्स ट्रीट यू लाइक ओ गॉड, ऐसा निकम्मा बच्चा हमारे स्कूल में कैसा हो गया, सीधा इसको रेमेडियल क्लास में डालो, विच लुक लाइक कोविड आइसोलेशन सेंटर्स, राइट. आपको एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, अरे ये तो बेकार बच्चा है, इसकी वजह से पूरे स्कूल का एवरेज डाउन होगा, पूरे स्कूल का रिजल्ट डाउन होगा. सो देयर इज दैट होल फीलिंग दैट इफ यू डोंट डू वेल इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, it's the worst thing to happen in a class 10 or a class 12 student's life, right. Schools organize not one, not two, not three, sometimes even 4 pre-board examinations. You know that. Most schools do 2, but I know of schools which conduct even 4 pre-board examinations. कैपिटल लेटर्स में डाले तो ये स्ट्रेस की बात है, STRESS, बहुत ज्यादा स्ट्रेस स्टूडेंट्स पे डाला जाता है. अब ICSE काउंसिल ने कहा है, बाबूजी आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस मार्च के एंड से पहले कंडक्ट मत कीजिए, खास तौर पे तब जब आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है या पूरी तरह से रिवाइज नहीं किया गया है स्कूल के अंदर. नाउ is this happening? Many students are telling me in some cases it has been postponed by a few days. In many schools pre-board examinations are still taking place. फर्क ये हुआ है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस ना बोल के उसको मॉक टेस्ट बोला जा रहा है, क्लास टेस्ट बोला जा रहा है, विच इज स्टिल काइंड ऑफ ओके, बिकॉज ये जो बोर्ड करके एक वर्ड है ना, बहुत भारी भरकम वर्ड है, बहुत वेट पड़ता है, बहुत वजन पड़ता है इस वर्ड का. एंड आई डोंट थिंक इट्स रियली फेयर टू सब्जेक्ट ए 15-year-old, 16-year-old, 17-year-old स्टूडेंट टू दिस काइंड ऑफ unnecessary stress and pressure. So I just want to ask, can we make it a little easier for the students? Even if it is a cosmetic change, can we make it a little easier for the students and do away with, ban this word called pre-board examinations, make it sound positive, make it sound more encouraging. Let's call it getting ready assessment, GRA, or we call it preparation time. Even better, let's call the first pre-board examination, pre-board नहीं बुलाएंगे, पहला जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जब भी होगा, द फर्स्ट स्टेप. दूसरा एग्जाम जो होगा, द सेकेंड स्टेप. अगर तीसरा कराते हैं, द थर्ड स्टेप. सो देयर इज ए सेंस ऑफ दैट यू आर मूविंग अप द लैडर, देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस एसोसिएटेड विद इट, देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट विद इट. सिंपली नहीं तो स्पोर्टिंग टर्म्स में देखना है तो नेट प्रैक्टिस बोल दो या ट्रायल मैचेस बोल दो, बट ये प्री बोर्ड्स वर्ड को एक तरह से डिक्शनरी से, वोकैबुलरी से हटा दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी द बोर्ड्स आर ए प्रेशर कुकर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. ये रन अप टू द बोर्ड्स को भी उतना ही प्रेशर कुकर एटमॉस्फेयर क्यों बनाना है? दैट इज द आर्ग्यूमेंट. लेट स्टूडेंट्स एंजॉय द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, लर्निंग, रिवाइजिंग, so that there is less pressure, and under less pressure they will always perform much better. And mentally अगर कोई अच्छा नहीं करता है तो एक तरह से लेट्स नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैट स्टूडेंट और दैट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज जो ये रेमेडियल सिस्टम का जो एक चलन है, 6-7 स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनको एक क्लास में डाल देते हैं, ये दिस इज द ग्रुप, इसको ठीक करने का है, सो यू आर मेड टू सीम लाइक सम काइंड ऑफ अ टारगेट ग्रुप, एक सम काइंड ऑफ अ रिजेक्टेड कैटेगरी. बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट इट बिकम्स ए बिट लाइक दैट. एंड I personally feel, interacting with a lot of students, that insult is never the best medicine. आप किसी को भी इंसल्ट करके, ह्यूमिलिएट करके आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं. आप उस बच्चे के अंदर ज्यादा घृणा की भावना को
इंक्रीज कर रहे हैं. You're making that student hate studies, hate the whole school atmosphere much more by making him feel like some kind of a rejected category student. So let's not do that. In fact, I would suggest, if this is indeed possible, attach one high scoring student with a student who has not scored very high marks. Build that kind of a bondage, and it will also help the student who is high scoring, because it will help him in the process of revision when he's teaching and helping his friend who has not scored very high marks, say in geography or in mathematics or in any of the language papers, right? In fact, I would give, I mean, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, but I'll give you the example of SWS. What really happens, because we have students from all over the country interacting together in the chat room. So you have a student from Jalandhar helping a student from Kochi. You have a student from Madurai helping a student from Gorakhpur. You have a student from Kolkata helping a student from Pune. That is the kind of, dare I say, national integration that really takes place, which is why I say it's not just a digital classroom, it's India's digital classroom, because I love the fact that they are so giving. There's a lot of give and take. They exchange papers, they exchange notes, they exchange short notes which they make, right? Smart notes which they make from my notes to make it easier, and say, okay, it helped me, maybe it will help the other 50 odd students who are also part of this particular group. That's the kind of bonhomie that you can actually encourage within a school atmosphere, which has been existing for so many years. We are a very small organization. And I really believe that if they learn this kind of teamwork and team spirit, in future, they will go on to become great team people and great team leaders. That's a kind of an attitude we can develop right from this stage. So pre-boards can actually become a great opportunity to kind of encourage this kind of an attitude and mindset. Because marks ke basis pe division create karna, I think it's not the thing to do, and I don't think schools should ever do something like that. The pre-board examinations, या उसको किसी भी नाम से बुला लो, मैं तो first step, second step के favor में हूँ. First step, second step, third step should be an opportunity to move up the ladder, to make each one of our students a better student and a better human being, a better individual and a better team player. Thank you very much for watching.